सो इमेजिन आपका एमबीए कैंपस गोवा में है। आप 2 years गोवा से एमबीए करते हो, दैट टू फ्रॉम अ कॉलेज जिसका एवरेज पैकेज 15 लाख है एंड हाईएस्ट पैकेज 32 lakhs. But it's not easy to make it to this college. You need a pretty decent CAT percentile to make into this B school, and this year they have also received the AACSB accreditation, which only 27 B schools in India have. So I'm talking about the Goa Institute of Management, and let's discuss all the details about this institute in this video. So we'll start with the placements. Goa Institute of Management से आप 4 programs pursue कर सकते हो. First is PGDM, which is a flagship MBA program. Next, PGDM in Big Data Analytics BDA, then PGDM in Healthcare Management HCM, and then PGDM in Banking, Insurance and Financial Services BIFS. तो ये 4 programs आप यहाँ से pursue कर सकते हो. And for your convenience, मैं आपको सभी programs के average package, highest package and top 50 students का average package screen पे दिखा रहा हूँ, so that you get all the consolidated information in this particular table. तो आप इसको पॉज कर सकते हो, इससे स्क्रीनशॉट ले सकते हो, एंड यू कैन सी इन दिस पर्टिकुलर टेबल नो मैटर विच प्रोग्राम यू आर चूजिंग, यू विल गेट अ डिसेंट एवरेज पैकेज. एंड इसलिए मैं सभी प्रोग्राम्स आपको ब्रीफली एक्सप्लेन भी कर देता हूँ, सो दैट यू कैन मेक द राइट चॉइस बेस्ड ऑन योर इंटरेस्ट एंड नॉट जस्ट द प्लेसमेंट नंबर्स. सो फर्स्ट एज आई सेड, पीजीडीएम प्रोग्राम इज द फ्लैगशिप एमबीए प्रोग्राम. जैसे आप कोई भी जनरल एमबीए प्रोग्राम परस्यू करते हो एंड यू टेक वेरियस मैनेजमेंट कोर्सेज लाइक यू हैव योर कोर एंड इलेक्टिव कोर्सेज, सो दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम दिस इज. एंड यहाँ पर ऑब्वियसली इट्स अ फ्लैगशिप प्रोग्राम. बहुत सारे रिक्रूटर्स आते हैं. मेजर रिक्रूटर्स इंक्लूड your Accenture, Aditya Birla Group, Asian Paints, ITC, Deloitte, etc. Last year, 136 companies had visited for this program, and there are 301 students. There were 301 students in the batch last year, and 44% of them were freshers, and 56% had experience. So, सभी programs के लिए मैं आपको उनका batch strength क्या था and कितने recruiters आए थे specifically for that particular program मैं आपको बताता रहूँगा, so that it helps you. So next is the PGDM Healthcare Management. यहाँ पर obviously management courses के साथ साथ focus रहेगा आपका हेल्थ केयर के कोर्सेज में. यहाँ पर द रिक्रूटर्स इंक्लूड योर जाइडस, जॉनसन एंड जॉनसन, फिलिप्स, कंसल्टिंग फर्म्स भी आते हैं लाइक डेलॉयट, एलिके, वो भी हायर करते हैं यहाँ से. एंड लास्ट ईयर 28 कंपनीज विजिटेड फॉर दिस प्रोग्राम. देयर वर 61 स्टूडेंट्स इन दिस प्रोग्राम एंड 50% ऑफ देम वेर फीमेल्स. नेक्स्ट इज पीजीडीएम बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, एंड ये एक 2 year मैनेजमेंट प्रोग्राम है विच इज प्रोवाइडेड इन कोलैबोरेशन विद 20 बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. सो यहाँ इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में आपको एक्सटेंडेड इंटर्नशिप भी मिलता है विद द इंडस्ट्री पार्टनर्स, एंड वही इंडस्ट्री पार्टनर्स आपको मेंटरशिप भी प्रोवाइड करते हैं ड्यूरिंग द प्रोग्राम. सो ये थोड़ा डिफरेंट काइंड ऑफ अ प्रोग्राम है विद इंडस्ट्री कोलैबोरेशन. एंड हियर फर्म्स लाइक जेपी मॉर्गन, बार्कलेज, बैंक ऑफ अमेरिका एंड बहुत सारे इंडियन बैंक्स भी हायर करते हैं फ्रॉम दिस प्रोग्राम. लास्ट ईयर 25 कंपनीज विजिटेड फॉर दिस प्रोग्राम फॉर अ बैच ऑफ 58 स्टूडेंट्स. नेक्स्ट इज पीजीडीएम बिग डेटा एनालिटिक्स, एंड दिस इज अ वेरी हैंड्स ऑन प्रोग्राम जहाँ सब कुछ आपको हैंड्स ऑन सिखाया जाएगा. देयर इज अ 5 month इंडस्ट्री इंटर्नशिप एज वेल इंक्लूडेड हियर. एंड ऑब्वियसली यू नो कि कितना डिमांड है बिग डेटा एनालिटिक्स का, स्पेशली एज अ मैनेजमेंट स्टूडेंट अगर आप हैंड्स ऑन भी कर पाते हो. एंड ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ रिक्रूटर्स नीड पीपल विद दिस काइंड ऑफ टैलेंट इन बिग डेटा एनालिटिक्स. सो यू विल सी अ लॉट ऑफ फर्म्स हियर एज वेल, लाइक देयर इज EXL, HSBC, EY, JP Morgan and many more come here. Last year 47 companies had visited the campus for a batch of 143 students, and in this program 39% were freshers and 61% had work experience. Next, coming to the fees had 21.45 lakhs for the 4 programs. All the 4 programs का same fees है, but remember there are scholarships as well that you need to be aware of. ये आप avail कर सकते हो इन scholarships को on the basis of your merit as well as need, and these scholarships are also available across all the 4 programs. तो मैं आपको एक consolidated table दिखा देता हूँ कि कितने सारे scholarships available है. You can get a merit scholarship of 5 lakh rupees across the 4 programs, and 45 students you can see from PGDM will get 5 lakh scholarship. HCM से 7 students will get it, BDA से 21 students and BIFS से 7 students will get this 5 lakh scholarship. So चारों प्रोग्राम में you can get a 5 lakh scholarship, a merit scholarship. On top of that, you can also get a 100% tuition waiver if your family income is less than 8 lakhs. Obviously, it depends on merit as well, but on the basis of your merit and need, you can also get a 100% tuition waiver. So you can check your eligibility for that, and also based on your performance, you can be selected for this kind of a waiver. And if you want to apply here, you can apply in the Achievers round itself so that you can get that scholarship. But only thing is the Achievers round deadline is 4th December only, so you need to apply really quick. And इस particular round में, that is Achievers round
round में your overall profile matters, extracurriculars, work, everything matters, and your CAT or other exam scores will be factored in later. And सभी programs के लिए मैं आपको eligibility बता देता हूँ so that you know whether you can apply or not. So first of all, you should have got at least 50% in your bachelor's degree. Students who are there in the final year of their graduation, they can also apply, and you should have appeared for these examinations, either CAT 2025 or ZAT 2026 or the GMAT exam. And finally, मैं आपको application admission process के बारे में बता देता हूँ. First of all, you need to fill the application form. There's a separate application form for Goa Institute of Management. So सबसे पहले आपको वो भरना है and submit करना है before the deadline. Once that is done, you can see that there are different deadlines. There are different rounds and deadlines that Goa Institute of Management is having. And let me put it up in a consolidated manner so that you do not miss out on any. मैंने आपको already achievers round के बारे में बता दिया. That is the deadline is 4th December for that. And यहाँ पर basically profile based calls roll out किए जाते हैं. Exam score, your CAT score and everything will be factored in later. So if you have a good profile, you can be shortlisted without your exam score, and then you have to clear basically the cutoffs for the other exam, the MBA entrance examinations. You have to clear those cutoffs. So this is a very good round for someone who has a very good profile. इसके बाद your CAT and other exam scores will be factored in. So आप next round देख सकते हो, that is the CAT deadline round है, and the deadline for that is 23rd December. So 23rd December के पहले तक you have to register if you want your CAT score to be calculated. So CAT score के through you can apply till 23rd December. Post 23rd December, your CAT score will not be considered. Obviously, there are other examination that you will be giving, that is your ZAT examination. So that can still be considered after that. But अगर आपको CAT exam के through apply करना है, make sure you apply before 23rd December. So अभी तक मैंने क्या बताया आपको, अगर आपको profile based apply करना है, you have to apply in the achievers round itself, that is before 4th December. अगर आपको CAT के through apply करना है, you have to apply by 23rd December. So the final deadline for Goa Institute of Management will be 2nd January. So 2nd January के beyond no applications will be accepted, and 2nd January में आप ZAT exam के through apply कर सकते हो for this particular institute, and CAT exam as I said 23rd December को खत्म हो जाएगा. So उसके पहले apply कर देना if you have appeared for CAT examination, and 2nd January तक final deadline will also close. So these are the dates that you should keep in mind. Once you fill the application form, then on the basis of your profile as well as your entrance exam scores, you will be called in for the interviews, and if you happen to clear those interviews, then the final admission offer will be rolled out. So I hope I have covered all the details of the college that you required. If you still have any doubt, you can just let me know in the comments. I'll be happy to address it. That's it for this particular video. See you in the next one.